Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, guys, in this particular session, we are going to discuss our unit number 22nd, which is funding and regulatory aspect. Okay. So, we have done with unit number 19, Introduction to Treasury Management, 20th, Treasury Product, and 21, International Equity and Debt Product. Okay. So, today, in this particular session, we are going to talk about funding and regulatory aspects and the involvement of treasury itself, right? So this is the course content. As we all know, treasury, they generally make their position in short term, and the reserve requirement like CRR, SLR, they are generally and like nowadays these particular responsibilities are generally handled by treasury department itself. Okay. So reserve asset, CRR and SLR, then LAF participation, liquidity adjustment facility, and basically these tools are generally used by banks in their short-term liquidity crunches, or even if we have surplus funds. Okay, so LAF, which is a tool of a monetary policy itself. Okay, so where we have repo rate, reverse repo rate, bank rate, these are kind of tool under this particular framework. Then we have payment and settlement system. So for that one, we have PSS, Payment and Settlement System Act 2007, and NPCI is that generally work as an umbrella organization to manage all these particular activities. Okay, so these are the subtopics of this particular one, three subtopics which are generally part of this particular unit. So again, with the help of a set of questions, we are going to discuss all these particular aspects or subtopics in detail. ठीक है, तो एक एक करके आपका हर एक एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट जितना आपका बुक का कंटेंट है वो सारा कंटेंट और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which of the following statement is true regarding the Basel III leverage ratio? ठीक है, this we have already discussed in our module B itself, if you guys remember this one. ठीक है, और अगर आप लोगों ने वो सेशन देखे होंगे तो ठीक है. So leverage ratio, which is something linked with the exposures limit. ठीक है, like if a bank having open position in derivatives or off balance sheet instruments like LC and all. स्पेशली वी यूज दिस पर्टिकुलर वन. तो जहां पे भी आप लिवरेजेस ले रहे हो बेसिकली, ठीक है, फाइनेंशियल वेयर एवर यू आर यूजिंग द फाइनेंशियल लिवरेजेस, मोस्टली वी यूज विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, so for that particular sake we have leverage ratio, which how we calculate this one, tier 1 capital divide by आपका risk exposures. Okay, so it measure the proportion of bank high quality liquid asset to its total liabilities. No, अगर हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होता और 30 डेज कैलेंडर डेज होता तो ये आपका LCR होता. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग. It ensure that bank maintain a minimum level of capital in relation to their total exposure without applying risk weight. हाँ, this is true in case of leverage ratio. We like जैसे आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है या आपका CCB कैपिटल कन्वर्जन बफर्स है, दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर रिस्क वेट एसेट. बट लिवरेज रेशियो इज something which is linked with the total exposures. ठीक है, as I said कि tier 1 capital divide by total exposures, that is the kind of basic formula जिससे हम इसको calculate कर सकते हैं. ठीक है, so this is true. It is used to determine the minimum liquidity reserve a bank must maintain meet its short-term stress condition. This is about the LCR. Wrong. It is primarily applicable to non-banking finance companies rather than no. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, so option B 100% will be right answer for this particular one. ठीक है, so leverage ratio is a non-risk based measure that ensure bank have adequate capital. ठीक है, and tier 1 capital divided by total exposures. ठीक है, remaining HQLA, which is related to LCR. Basel III leverage ratio apply to scheduled commercial bank, not on NBFCs. ठीक है, liquidity reserve fall under the net stable funding ratio. That is generally known as आपका NSFR, right? So that is the one. Next one. Under the RBI's capital framework, which of the following consider a risk weight asset
for calculating the capital risk weight asset CRAR. ठीक है? So now it is about your calculation of CAR, or in India it is generally known as CRAR, capital to risk weight asset ratio. ठीक है? So कौन सा टूल आपका जिसके अगेंस्ट में you have to create the एडिशनल बफर ऑफ कैपिटल. ठीक है? और जो CAR या CRAR कैलकुलेशन के लिए आपका एलिजिबल होगा. सो कैश रिजर्व मेंटेन विद RBI, नो. फॉर इसके अगेंस्ट में आपको यू डू नॉट हैव टू मेंटेन CRAR. ठीक है? लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स 100% यस. ठीक है? सो आपका 150% का आपका जो रिस्क वेट एसेट्स like you have to maintain in that particular case. Tip. Government securities held by bank for statutory liquidity purposes, no. इक्विटी कैपिटल के अगेंस्ट में नहीं होता. ठीक है? सो ऑप्शन बी, लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स. ठीक है? सो रिस्क वेट एसेट आर दोज that carry a credit, market and operational risk. Loan and advances to a corporate have assigned the weight based on the credit ratings, and it is part of your credit risk. Okay? So remainings are not part of this one. Next one. According to RBI's external commercial borrowing framework, which of the following entities is not eligible to raise ECB under the automatic route? So basically, banks and NBFCs are not eligible to raise funds under ECB. So some asset financing companies, they can go with this particular one. Okay? So manufacturing company in infrastructure, they are allowed. A non-banking NBFC engaged in asset finance, they are also allowed. Okay? A microfinance institution seeking ECB for lending to small purposes, no. They are not allowed in this particular case. An Indian startup registered with the Department of Promotion and Industry and Internal Trade, they are also allowed up to 3 million US dollar per financial year. Okay, so what will be your correct answer for this one? Option C will be right answer for this one. Okay. So as per RBI ECB guidelines, microfinance institution cannot raise ECB under the automatic route. Only NBFCs and DPIIT registered startup can raise ECB for a specific purpose under automatic approvals. Right. Next one. In the event of bank failure, which of the following instrument is most likely to observe losses first? ठीक है? तो सबसे जो बड़ा टूल हमारे पास होता है, that is tier 1 capital itself, right? हाँ, तो यहाँ पे आपका secured long term corporate additional tier 1 fixed deposit by retail no. So in this particular case, what will be your correct answer? Additional tier 1 or 81 capital instrument should be right answer for this particular one. Okay? So like this perpetual bonds and all. Okay? So tier 1 81 bonds like perpetual bonds are designated to observe losses if bank capital fall below the required threshold. RBI can write down 81 bonds or convert into equity to prevent a bank collapse. Okay? So they do have that right. Like these are kind of prep is like bonds, perpetual bonds is bond without maturity. And they do have that options. Investor they can convert them into equity after a certain period. So if a bank is facing that much of crisis, so they can be converted into equity itself. So we can prevent that particular bank, or like we can help like basically जो situation आपका है वहां से उसको बाहर निकाला जा सकता है. ठीक है? Which of the following transaction is subject to RBI LRS limit for Indian resident? So LRS scheme हमने बहुत अच्छे से समझा था मॉड्यूल ए के अंदर. It is this scheme is only and only for resident individuals including minors. ठीक है? इसके अलावा और किसी के लिए नहीं है. 4th of February 2004 when RBI introduced this particular scheme with an initial amount of 25,000 US dollar per financial year limit. Right now it is 2,50,000 US dollar per financial year. An individual including minors, they can use this particular scheme for current as well as current account transactions. Current and as well as capital account transactions. And it is a subject matter of TCS collection also. The current one is 7 lakh, but as per the new budget, it is increased to 10 lakh also. ठीक है? तो ये कुछ चीजें आपका.
So a corporate entity making a foreign, no, it is not for corporate. An individual remitting fund abroad for personal investment in global stocks, yes. Scheduled commercial, no. Individual, Indian startup, no. Okay, so option B, without any doubt, will be right answer for this particular one. Okay, so we have two major categories of investment done by individuals under this. One is current account, which is like the personal purposes like education, medical treatments, or travel, tour and travels, and all. Okay. And the another one is capital investment, where individuals they are generally making investment abroad. Okay. So it can be in the form of joint ventures or wholly owned subsidiary or any purchase of securities as well. All right. So next one. What is the primary function of LAF, liquidity adjustment facility, in India's monetary policy framework? ठीक है, तो LAF को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. बाय मंथली मीटिंग्स आपकी होती हैं आरबीआई की, एंड आरबीआई generally as per the current liquidity status and the requirements of the Indian economy, RBI adjusts liquidity by using this particular framework, right? So जहां पे सबसे important tool है आपका रेपो, एंड रेपो के साथ ही आपका आरबीआई इंक्रीज जो लिक्विडिटी है उसको आपका मैनेज करता है. ठीक है, इट हेल्प आरबीआई टू manage overall liquidity in the system or the money supply in the system. Okay, as RBI did recently, they decreased the repo rate. That means there will be more cash flow in the economy itself, right? So to regulate long-term interest rate by adjusting a no, to provide short-term liquidity to bank through repo transactions, and to absorb excess liquidity by reverse repo 100% true, to facilitate foreign exchange no, to directly influence the inflation no. There is no direct influences of inflation of LAF on inflation. Like as I said, ki RBI recently decreased repo rate by 25 basis point. In long term, it will help to combat the inflation, or inflation rate will come down, inflation will go up. Reason being, मतलब धीरे धीरे उससे उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे आप रेट आपका कम हुआ तो बैंक विल टेक मोर मनी फ्रॉम आरबीआई एंड दे लैंड मोर मनी टू द कस्टमर्स. ठीक है, so there will be more money supply in the economy that will eventually lead to the demands and that will increase the inflation. But वो एकदम exact आपका नहीं रहता है. CRR and SLR they do have that much of impact. ठीक है, so LAF is a principal tool of RBI monetary policy to manage short-term liquidity in the banking system. It consists of repo, repurchase agreement. Bank can borrow from RBI by pledging government securities, in this case. Reverse repo, where bank they generally deposit their surplus money with RBI. ठीक है, अब यहाँ पे this is the chart which we have already discussed in our concept class, but please go through this particular one. ठीक है, तो इसमें आपका अराउंड 10 स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वांटम एंड periodicity and timings आपका जो दिया गया है. ठीक है, so we have like 14-day variable rate repo, variable rate term repo, we have fixed rate reverse repo, we have MSF marginal standing facility, forex swap. ठीक है, आपका standing deposit facility which is a kind of a replacement to your reverse repo. In case of like what is the major difference between repo and reverse SDM, reverse repo and SDM? In case of reverse repo, RBI generally plays like it is a kind of cash flow between bank to RBI. Bank is depositing their surplus money with RBI. In return, RBI also provides some collaterals, securities. But in case of SDF, RBI does not provide any collateral. But the rate of, if you check the rates in case of SDF, it is much higher than compared to your reverse repo rate. ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते होंगे मोस्ट ऑफ. लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो रेट. ठीक है, so this is आपका LTR, आपका टेन्योर बियॉन्ड 14 days. लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट LTRR, tenure beyond 14 days. Forex swap auctions and open market options. Open market operation is as simple as that. It is buying and selling of government securities by RBI. All right. So this is the one. थोड़ा सा इसको आप लोग देखिएगा. And just do revise. In our concept part itself, we have discussed all these particular fundamentals and all. ठीक है, तो वहीं से मैंने आपका सेम पीपीटी से इनको आपका लिया था. ठीक है, जिससे आप रिवाइज कर पाए while you go through this particular PDF. Which of the following liabilities is excluded from CRR, cash reserve requirement, cash reserve ratio, maintenance requirement for scheduled commercial banks? So which of the following liabilities is excluded from CRR?
तो आपका डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, दे आर पार्ट ऑफ योर DTL, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. Net income provision, yes, so net income provision is not part of this. Fixed deposit held by non-banking financial companies, yes, it is also part of this. ठीक है. And margin held against letter of credit and bank guarantee, it is against part of your NDTL. ठीक है. So this is the one. So net income tax provision, net income tax provision are excluded from CRR मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक. ठीक है. सो ये आपका नहीं, इस पे आपका नहीं होता है CRR. रेस्ट ऑल द टूल्स आपका इस पे भी काउंट होगा, इस पे भी काउंट होगा, इस पे भी काउंट होगा. while we will calculate the DTL of that particular bank itself. ठीक है. तो प्लीज ध्यान रखें, CRR is a percentage of bank NDTL that must kept with RBI in the form of cash. जानते हैं हम लोग उनको. ठीक है. तो आपका जैसे certain liabilities are excluded from CRR like net income provision, paid up capital reserve, retained earning, subsidies from NABARD and DRDA's funds. ठीक है. तो जैसे एक लिस्ट मैंने आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया, दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड रिकॉल द थिंग्स. ठीक है. तो कौन कौन सा आपका फॉलोइंग लाइबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द CRR स्टिपुलेशंस. ठीक है. Paid up capital reserve, retained profit, refinance availed from RBI and apex institution like NABARD, SIDBI, EXIM and all. Net income provisions, claim received from DICGC, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, ECGC, Export Credit Guarantee Corporation, and insurance companies. Liabilities arising on account of utilization of limit under bankers acceptance facility. ठीक है. Then DRDA subsidy of 10,000 kept in subsidy reserve funds account in the name of self-help groups. Subsidy released by NABARD under the investment subsidy scheme for construction. Then we have net unrealized gain or losses arising from derivatives. Bill rediscounted by a bank with eligible financial institution as part of approved by the RBI itself. Okay? So these are the liabilities which against which your bank does not need to maintain that CRR. Simply saying that they are not part of the, like while we calculate the CRR thing, and for CRR calculation when we do that DTL calculation, they are excluded from that particular calculations. Okay, बहुत important है, please ध्यान रखेंगे. Next one. Under the negotiated dealing system, so NDS is a kind of electronic platform. ठीक है. It is by RBI itself. तो जहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनका सेल परचेज आपका होता है. ठीक है. दैट इज द वन. ठीक है. सो बेसिकली गवर्नमेंट और RBI वर्सेस आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में आपका. ठीक है. एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म वी हैव वन रिटेल डायरेक्ट स्कीम. आई होप आप लोगों को याद होगा. ठीक है. तो जहाँ पे as an individual we can also directly become part of those particular one and we can open an account with RBI itself. ठीक है. That is आपका रिटेल डायरेक्ट स्कीम. ये आपका क्या है, NDS, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम आपका, जहां पे मोस्टली आपकी जो मनी मार्केट ऑक्शनिंग होती है दैट जनरली हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. ठीक है. So what is the primary function of the platform in India's financial market? So facilitating the इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, पहला ही सही है. ठीक है. enabling direct negotiation between retail and RBI, no. Managing interbank forex, no. Providing direct loan, no. तो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. सो NDS is an electronic platform introduced by RBI in 2002, streamline trading and settlement of government securities, automate reporting and reduce risk in the bond market, support electronic auctions of government securities or GSEC. That is the primary objective of this particular platform. ठीक है. तो एक बार थोड़ा सा इसको जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं. सो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज in money market, government securities and money market. RBI introduced NDS in 2002, February 2002, in order to achieve first automatic electronic reporting and settlement process, then auction on electronic platform, and C is trading platform for
trading in government securities GSEC on a negotiated basis means telephonic based trading, okay, as well as code driven mechanism as we have Odin and all for BSC NSE platform. Okay. The NDS membership is open to bank. So who all are the members of this? Banks, primary dealers, mutual funds, then financial institution, insurance companies who maintain SGL account with RBI, and also those who have constituent SGL account through a bank or depository institutions. Okay. In 2005, NDS OM, open market or anonymous order matching system, as an improvement over NDS. In anonymous order matching, the identity of counterparty is not disclosed till the offer price or volume accepted. The system is primarily order driven, with all orders being matched strictly on प्राइस टाइम प्रायोरिटी, ठीक है, प्रो रेटा ग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. The NDS OM coexist with a telephone based trading mechanism on NDS. The system allows straight through processing, and trade executed will flow straight to CCIL, which is a आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, फॉर द सेटलमेंट्स. ठीक है. तो एनडीएस आपका एक गवर्नमेंट, एक आरबीआई प्लेटफॉर्म फॉर द trading and participation in money market and government securities. Next one, what is the penalty for failing to maintain daily CRR balances with RBI regulation? क्या है? 3% फर्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड 5%. ठीक है. तो 3% एंड 5% आपका, ठीक है. अ फिक्स पेनल्टी ऑफ 10 lakh, नो. A 3% per annum above the bank repo rate of the shortfall of first day, increasing to 5% per annum in the if the shortfall continues. So आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको. This is the static one and clear cut. ठीक है. If bank fail to maintain the daily CRR requirement, the penalty 3% per annum above the bank rate. ठीक है. तो ये लिंक है आपका बैंक रेट के साथ. ठीक है. So per annum plus bank rate for the first day of shortfall, and from second day onwards it will be 5% plus bank rate. Okay, next one. Which of the following is not considered as considered part of a net demand liabilities in CRR SLR calculations? Okay. So while we generally calculate NDTL, basically your CRR and SLR, they are directly linked with your NDTL amount. Okay. So it is like CRR is a portion of that NDTL that bank they have to maintain with RBI in the form of cash, and RBI does not pay any interest on CRR. SLR is a portion of NDTL that a bank need to maintain with itself in the form of cash, gold and government securities. ठीक है. तो अब कैलकुलेशंस जब while you calculate this NDTL, ठीक है, डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज को, ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक्सक्लूडेड रहता है आपका? ठीक है. Current account balances of customers, yes, it is part of this. Gold reserve held by bank. गोल्ड रिजर्व हेल्ड बाय बैंक यूज फॉर एसएलआर. ठीक है. ये आपका थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट है. ठीक है. इफ इट इज एसएलआर देन इट इज आपका नॉट पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. balances in overdue or fixed deposit, yes, it is excluded. ठीक है. unclaimed, it is included, sorry. ठीक है. unclaimed deposit from customers. ठीक है. current account balances, balance in overdue आपका fixed deposit and unclaimed, these get included. ये आपका पार्ट होते हैं एनडीटीएल के कैलकुलेशन का. ठीक है. बट दिस गोल्ड रिजर्व हेल्ड बाय अ बैंक, so gold deposit and reserve, there is a different things. So gold, if it is gold deposit, it is part of your demand time liability, and it will get included. But gold reserve आपका, which we generally maintaining for SLR things and all, so that will not, that should not be part of this particular one. So B should be right answer for this. Yes, हाँ. ठीक है. तो डिमांड लाइबिलिटीज आपका जैसे करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, कॉल मनी बोरोइंग्स, टर्म डिपॉजिट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, cash certificates over due deposits. Yeah. Gold reserve are not part of NDDL. They are counted as SLR asset in this particular one. ठीक है. तो ये आपका लिस्ट है. This list is very very important for all of you, right? So component of
एसेट आपका डिमांड लाइबिलिटीज मींस कासा डिपॉजिट मोस्टली, करेंट डिपॉजिट आपका, ठीक है, विच कैन बी डिमांडेड बाय कस्टमर एनी टाइम, ठीक है। सो करेंट डिपॉजिट्स आपके हैं सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट्स, ठीक है। डिमांड लाइबिलिटीज अ पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट, margin held against letter of credit or guarantee, balances in overdue fixed deposit, cash certificate, and cumulative recurring deposits, outstanding telegraphic transfer, mail transfer, demand drafts, unclaimed deposits of customers, credit balance in cash credit accounts, deposit held as security for advances which are payable on demands. So money at call and short notice from outside the banking system shall be shown against liability to others. कंपोनेंट ऑफ टाइम लाइबिलिटीज, तो ये आपका डिमांड लाइबिलिटीज थी, फर्स्ट वाला आपका, दीज वर द डिमांड लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज आपका विच लाइक बैंक होल्ड फॉर अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। सो टाइम लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक shall include liabilities which are payable otherwise than demand and shall include the fixed deposit, आपका कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट, time liabilities portion of saving account, staff security deposit, margin held against LC, deposit held as securities for advances, गोल्ड डिपॉजिट, ठीक है, आपका रिजर्व नहीं बल्कि डिपॉजिट, ठीक है, दैट इज द वन। तो प्लीज इनको ध्यान रखें, बहुत बार आपको ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन, under RBI guidelines, which of the following asset qualifies as eligible SLR investment? SLR investment किसमें होता है आपका? गोल्ड, आपका अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, ठीक है। दीज आर द थ्री अल्टरनेट्स, मोस्टली इट इज इन केस ऑफ आपका एलिजिबल सिक्योरिटीज। आपका शेयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नो। गोल्ड हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, ट्रेजरी, गोल्ड हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, नो, ठीक है। सो दिस इज आपका, ये गलत होगा, ठीक है, गोल्ड हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए। ट्रेजरी बिल एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन, यस, हाँ ये होगा, ठीक है। आपका इंटर बैंक बोरोविंग्स, नो, ठीक है। सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, यस, हाँ। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड दिस एलिजिबल SLR सिक्योरिटीज आपका, जिनको हम लोग बोलते हैं। As per RBI regulation, bank must maintain the CRR as a percentage of which of the following? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, NDTL आपका, ठीक है। सो NDTL आपका, सो CRR is equal to cash reserve with RBI divided by NDTL into 100, आपका जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें आपके होते हैं while we calculate the आपका DTL for the CRR? ये सब चीजें इनके बेसिस पे विच वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड एंड यूज ऑफ ECB एज पर RBI गाइडलाइंस? तो जैसे इफ देयर इज अ कंपनी, इंडियन कंपनी हु रेज फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू ECB, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी द प्रोसीड ऑफ दैट पर्टिकुलर वन? कहाँ पे उसको यूज कर सकती है? तो सिंपल है, अभी पिछले 2-3 दिन से यही चीजें हमारी चल रही है, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट में नहीं, दिस प्रोहिबिटेड एरिया। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ लैंड इन रियल एस्टेट इज प्रोहिबिटेड। स्पेक्यूलेशन इन कमोडिटी ट्रेडिंग आपका प्रोहिबिटेड, ठीक है। सो रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी, ठीक है। दीज आर द प्रोहिबिट सॉरी जो रिमेनिंग से दे आर प्रोहिबिटेड एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, refinance of rupee loan for certain sectors, manufacturing specifically, and where we are using that money for capital expenditures. And the one another thing is like there are some other areas it can be used for general corporate purposes also. But in that particular case, we have certain guidelines. There must be a foreign equity holders, and that funds we are raising via that foreign equity holders, right? Which of the following best describe the function of MSF, marginal standing facility, in monetary policy? ठीक है, so it is like basically तो MSF is like a tool जहाँ पे if there is a shortfall in SLR, ठीक है, so there is a kind of notional transaction between RBI and that bank itself, कि जो गैप आपका है वो गैप आपका फिल किया जाएगा थ्रू MSF rate, and we'll assume it is kind of a kind, there is no actual cash flow actually,
maximum limit is 2%. If the shortfall is up to 2%, that can be managed by using MSF, and bank need to pay interest to RBI in that particular situation. Okay? So it allow bank to borrow overnight funds from RBI by pledging government securities beyond the SLR requirements. क्योंकि देखो इसका जो एक्चुअल यूज है ना, लाइक लेट्स से बैंक दे हैव टू मेंटेन CRR and SLR. If at the time of reporting, if they are missing, let's say if they have done overlending and all, team, तो अगर SLR का let's say 0.50% आपका missing है, then we can have some arrangement between RBI and bank under MSF and वहाँ पे, and it is kind of pledged by the government securities itself. Okay? A only will be right answer for this one. MSF is a tool for short-term emergency liquidity. Bank can borrow overnight funds from RBI by pledging government securities over and above the SLR limit. Okay, next one. Which of the following is a key feature of RBI's prompt corrective action framework? तो PCA आज के डेट में कोई भी बैंक इसके अंदर नहीं है, बट हाँ इट बिकम वेरी इफेक्टिव आपका. ठीक है, इसके 3 पैरामीटर्स होते थे. वन इज आपका प्रॉफिटेबिलिटी, अनदर वन इज आपका सबसे बड़ा था आपका जो ग्रॉस एनपीएस थे, ठीक है वो, और तीसरा वॉज some activities, I guess. So it is a regulatory tool that impose corrective measure on banks with weak financial indicators. Yes, पहला बिल्कुल सही है. It allow bank to reduce their CRR no, NBFC no, and is to ensure bank meet their priority sector no. First one only, like if there are some banks who is facing some sort of weakness in their profitability and their net non-performing assets are increasing, so RBI used to impose पेनल्टीज ऑन दोज पर्टिकुलर बैंक इन टर्म ऑफ PCA. तो जहां पे उनकी कुछ एक्टिविटीज को आपका रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे इन 3 फेजेस आपका. ठीक है, 3 अलग अलग फेजेस के अंदर आपका कि लाइक इफ यूल कम अंडर दिस यू विल बी इन फेज 1 एंड दीज you will be restricted from these particular activities and all. ठीक है, हाँ, these were the areas. हाँ, first one was about the CAR thing, capital adequacy ratio. If a bank is not maintaining CAR properly, another one is if your net non-performing asset is more than 2.5%, and third one is आपका return on assets आपका. ठीक है, so this is these on the, अगर कोई बैंक इनको miss out कर रहा है तो RBI used to kept some kind of we can say regulatory impositions on those particular bank. कि आप मतलब जैसे हमें ना कि आपका जिससे आपको एक तो आप PCA कैटेगरी में है, दैट मीन्स यू आर इन अ लाइक डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ RBI, आपके ऊपर पूरी नजर है. तो जिसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी, जैसे you cannot open new branches or you cannot disclose the dividend. And third तक आने आते हैं डायरेक्टर की सैलरी होल्ड करना एंड ऑल. सो देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रोविजन अंडर दिस वन. ठीक है, आरबीआई इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंडिंग भी. ठीक है, हाँ बिल्कुल. डिविडेंड, आपका ब्रांच एक्सपेंशन टू प्रिवेंट सिस्टेमिक रिस्क इन दैट पर्टिकुलर बैंक. ठीक है, नेक्स्ट वन. Under the Basel III framework, which of the following is not considered पार्ट ऑफ टीयर 1 बैंक कैपिटल? ठीक है, टीयर 1 बैंक कैपिटल का पार्ट नहीं होगा. अंडर द बेसल फ्रेमवर्क 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ बैंक टीयर 1 कैपिटल? पेड अप इक्विटी कैपिटल इट इज, स्टैच्यूटरी रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग इट इज, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स मींस आपका सबऑर्डिनेटेड और परपेचुअल बॉन्ड्स विद लॉस ऑब्जर्विंग फीचर्स. yes they are additional tier 1 subordinated debt instruments with a residual maturity. it include prep आपका, ठीक है, perpetual bonds आपका, ठीक है, subordinated debt instruments with a residual maturity of more than 5 years. हाँ, तो आंसर इसका डी होना चाहिए आपका. ठीक है, ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, सो एडिशनल इसके ऊपर ना हमने क्वेश्चन भी किया था 81 आपका जो स्टार्टिंग में, जहां पे परपेचुअल के बारे में, परपेचुअल बॉन्ड्स आपका जो which generally used for the loss observing features and all, it is also part of this. D is not part of this one. ठीक है, D is subordinated debt. It is kind of which include जो आपका tier 2 के अंदर आता है, एंड दैट इज जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं आपका मार्केट रिस्क को ऑब्जर्व करने के लिए. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है, अगर कल के डेट में ऐसा कोई सिचुएशन होता है. सो टीयर 1 कैपिटल कंसिस्ट आपका, हाँ जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया आपका करेक्टली, इट इज पार्ट ऑफ आपका टीयर 2 आपका. ठीक है, सो पेड अप कैपिटल, रिजर्व, रिटेन अर्निंग,
Then additional tier 1 is perpetual bonds with loss observing features आपका, कि जिनको अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी होती है so we can convert them into equity आपका, ठीक है, और बैंक को बचाए रख सकते हैं. Subordinated debt means secondary debt, they get secondary preferences at the time of liquidation. कल के डेट में अगर कोई बैंक वाइंड अप होता है तो पहले हम लोग जो प्राइमरी डेट है उसको पे ऑफ करेंगे, देन सेकेंडरी आपका, तो दे आर रिस्कियर इन नेचर, ठीक है, तो वो आपका उस टीयर 2 कैपिटल के अंदर आपका रहते हैं. नेक्स्ट वन, in the context of bank liquidity management, which of the following statement about NSFR is correct? तो अब NSFR हमने बहुत पढ़ा है पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले मॉड्यूल में. NSFR ensure that a bank maintain minimum level of high quality liquid asset 30. No, it is आपका क्या बोलते हैं इसको, LCR, ठीक है, it is about the LCR, liquidity coverage ratio. NSFR designed to reduce funding mismatch by requiring stable funding for long term, ठीक है, बिल्कुल सही. NSFR is a short term liquidity ratio. No. NSFR measure ability of bank to meet overnight liquidity needs. No, ठीक है, ऑप्शन B will be right answer for this particular one. ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग डिवाइड बाय रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, ठीक है, द रेशियो शुड बी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी अकाउंटेड टुवर्ड द बैंक हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अंडर LCR. तो LCR में हम किसको आपका इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, LCR कैलकुलेशन में आपका ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विद remaining maturity of 6 month, no. Cash and balances maintained with RBI, yes, हाँ ये सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है. Unsecured interbank equity, no, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता. B will be right answer for this one, ठीक है. Cash balances with RBI, government securities and all, they generally comes under HQLA, ठीक है, level 1 के अंदर. Next one, under the prompt corrective action, which of the following indicators is not used to determine when a bank should be placed under PCA. So अभी हमने डिस्कस किया था, there were three parameters: capital adequacy ratio, net non performing asset and आपका return on asset, ठीक है. LCR is not part of the PCA deciding things, ठीक है, तो आपका C will be correct answer for this particular one. तो ये तीनों के बेसिस पे आपका जो कैलकुलेशन होता है, ना कि LCR के बेसिस पे. ऑलराइट, सो दिस इज इट. तो ये एक आपका छोटा सा यूनिट, ओनली 3 सब टॉपिक वर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ लाइक वी हैव प्रैक्टिस अराउंड 20-25 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन. आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली, ठीक है. तो पिछले उसमें भी 3 ही आपके सब टॉपिक थे, इसमें भी, और ये सब टॉपिक भी ऐसे नहीं कि जो आपके लिए कंप्लीटली न्यू है. ये आपको क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल ए एंड बी का रिवीजन करें. जैसे दिस टॉपिक इज कंप्लीटली अलाइंड विद योर मॉड्यूल बी आपका, ठीक है. तो जहां पे हमने LCR, NSFR, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें LAF, ये बहुत बार हमने वहां पे आपका डिस्कस किया. आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली. नाउ आई विल सी यू टुमारो, ठीक है. कल हम लोग आपका डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 23. ऑलराइट, so this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.